Hello coders, welcome back to Simply Dev. So what we will learn today? As such, we will कुछ नया concept नहीं है, but if you have proper understanding and actual understanding of JavaScript, so there is one concept called fetch, a promises concept. So you should all know that concept. So what we will do is we will actually use that fetch method here. So why we are actually using that method? अभी क्या किया है? So what we have done is that we have hard coded, ठीक है, hard coded this data. उसके अलावा हमने क्या करा था? We have just one more thing कि हमने एक डेटा फाइल बनाई थी, उसके अंदर db.json, ठीक है, इतना किया था. तो चलो इसको एक बार रन करते हैं. Let's run that. npm start. Oh, okay, it is running. Till the time it is running, let's just also run this command. तो हमने कमांड देखी थी कि हमने we have made this local server. The command for this for this particular thing is this. I don't think कि मुझे repeat करने की जरूरत है. And if you want, you can just watch my previous video. Okay. So this is our endpoint. So this is somewhat our API. This is our temporary API because we are just not using backend. For testing purpose, we can actually make this. Okay, so this is our data. और ये डेटा हमने कहाँ देखा है? यहाँ पे, ठीक है. ओके, सो अभी हम फेच मेथड का यूज करेंगे. तो फेच में बेसिकली हम पर्टिकुलरली कौन से मेथड का यूज करेंगे? सो वी विल जस्ट यूज गेट मेथड टू एक्चुअली लिस्ट ऑल दिस थिंग्स, एंड व्हेन द सीरीज विल गो फर्दर वी विल जस्ट सी different methods also, like post, delete. Okay, for the timing I'll just use the get method. So how we can actually do that? So let's just remove this. So we will fetch our data in use effect, and we want that on initial request हमारा डेटा fetch होना चाहिए. हम इसमें dependency array भी थी, it should make it empty. Fetch कर रहे हैं, and it makes sense also. If you are going to a particular website और तुम वहाँ फर्स्ट जाते हो तो तुम्हें वहाँ सारा डेटा दिखता है. ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट है, कुछ दिख ही नहीं रहा है. सो इट मेक सेंस ऑल्सो. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा का फेच करते हैं. सो हाउ यू फेच? तो ये जो फेच वाला चीज है, इट इज बेसिकली जस्ट अ जावास्क्रिप्ट. So you should have understanding of JavaScript, as I said earlier. So I'll just use fetch method. So we were having our endpoints this. Okay, I'll just do that. I just put this. Okay, this is your end. So fetch is what fetch method will do is it will basically return promise. Okay, so in promise there are basically two methods. Just quick recap: resolve and reject. So if we get a proper response, so it will resolve, means our we have properly get our data. So I'll just write dot, and then okay, and then I will call one function. It will be basically not a function. I will just I will fetch the data. I will, after resolving data, I will get the data. So the data would be response. मैं इसको response नाम देता हूँ. Also, if I have right now अब मेरे को response मिल गया है. So this response will be in just stringify format, actual JSON की format. But अगर मुझे इसको use करना है, so I have to just convert it into JSON format. So what I will do is I will just make it into JSON object or JavaScript object. I made that. So, and what I will do is one more thing, I will just return it. This is, तो अभी तक हमने क्या देखा? ये हमने fetch किया, ये promise return करेगा, ये डेटा हमने लिया, उस डेटा को हमने कन्वर्ट करा JSON. So ये बेसिक fetch में ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही पर्टिकुलर फ्लो रहता है. और ये रिटर्न, ये बेसिकली एक
ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये भी कुछ अपना टाइम लेगा, ठीक है। वंस वी हैव गॉट द रिस्पॉन्स डॉट जेसन, उसके बाद क्या करेंगे, वी विल अगेन यूज देन मेथड। इन देन मेथड अभी मुझे डेटा मिल गया मेरा जेसन फॉर्मेट में। ओके यश, वी हैव गॉट द प्रॉपर डेटा। नाउ व्हाट वी विल डू इज okay, for the time being I'll just show you guys a data आया भी है नहीं, I'll just control it, console dot log। okay, so data, we will see data, so let's go to website। okay, अभी मैं इसको कंसोल चेक करते हैं, लेट्स सी द कंसोल। ओके, मैं एक एरे रिटर्न हुआ है, उस एरे में एक ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज अवर डेटा। तो जो हमारा ये डेटा, ये हमने वही डेटा के अंदर db डॉट जेसन, सो दिस इज अवर एक्चुअल डेटा। ओके, सो हमारा मीन्स सब सही चल रहा है एंड इट इज गुड। तो अभी क्या करना है, हमें कंसोल तो नहीं करना ना, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, तो व्हाट वी वांट, जो हमारा ब्लॉक्स है वो रिप्लेस हो जाए जो हमारा डेटा एपीआई से आ रहा है। तो मैं अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने हार्ड कोडेड किया था इसको हटाओ, ठीक है। इसको मैं इनिशियली क्या दूंगा, नल वैल्यू दूंगा, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा हार्ड कोडेड ना होके गेट द डेटा फ्रॉम आवर एपीआई। सो आवर एपीआई एंड पॉइंट विल बी दिस। ओके, सो अभी नल है, एक बार इसको वापस अनकमेंट करके देखते हैं। नाउ लेट्स सी दैट आता है। ओके, कुछ एरर आ रहा है, so let's just uncomment this, comment this। okay, so we have just comment that line particularly for the time being, हमने comment कर दिया, ठीक है। and now I will just refresh the page, so for the first time I will get the response। तो ठीक है, प्रॉपर जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और इनिशियली हमारा वैल्यू क्या है, नल है, सो हमने हार्ड कोडेड वैल्यू भी हटा दी है। ओके, सो अभी हार्ड कोडेड वैल्यू है। ओके, अब मैं इसको अभी मैंने क्या किया, सेट ब्लॉक्स के अंदर ये न्यू ब्लॉक्स, जस्ट सेकंड, हाँ ओके, तो हमारा डेटा प्रॉपर आया, ठीक है। तो अभी हमने बस कंसोल किया है एंड वी डोंट वांट बस सिर्फ कंसोल में प्रिंट हो, वी वांट कि एक्चुअल हमारा डेटा हमें आउटपुट में दिखे आपका साइट पे। तो हमने एक ये स्टेट बनाया ना, यूज स्टेट हुक यूज किया है, इन उसके अंदर एक वेरिएबल ब्लॉक्स, एंड सेट ब्लॉक्स इज बेसिकली एन फंक्शन। तो by using set blocks we can actually change the state of this block। so what we will do is I'll just use set blocks, और set blocks के अंदर I will pass one our data, जो हमें actual data मिला। ओके, set block अभी प्रॉपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये लिस्ट है, हमारा जो ब्लॉक्स है, ये वाला ब्लॉक्स है, तो हमारा जो अभी db डॉट जेसन था उसके ये वाला डेटा सारा यहाँ पे आ चुका है अपने इस ब्लॉक्स में, ठीक है, आफ्टर फेचिंग। तो इट शुड वर्क नाउ, जस्ट रिफ्रेश द पेज। ओके, कुछ एरर आ रहा है, अभी ये क्या बोलता है एरर, आई जस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है एरर कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो लेट्स जस्ट अगेन सी दैट वेयर इज लिस्ट, ठीक है। So you guys will be having one question कि यश सब तो हमने सही किया है कि हमने, ठीक है, इनिशियल स्टेट नल था, उसके बाद हमने फेच किया डेटा को फर्स्ट रिक्वेस्ट पे, डिपेंडेंसी एरे खा लिए, ठीक है। उसके बाद फेच करने के बाद हमें डेटा भी अच्छे से मिल रहा था एक्चुअल एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हमने उसको डेटा को सेट कर दिया यूजिंग सेट ब्लॉक्स। तो यश फिर गलती कहाँ हो रही है, उसके बाद हाँ ब्लॉक सेट करने के बाद फिर हम जस्ट लिस्ट के अंदर ब्लॉक्स को पास करें एज अ प्रॉप,
और वो मैप कर रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल वी आर गेटिंग एन एरर. So here comes an interesting thing. Key, basically our fetch method is returning some promise. So it will take some time. Huh? So starting में वो कुछ time लेगा. So what we are doing is that while it is fetching at that particular time, we are just mapping the blocks. मतलब अभी तक हमारे पास डेटा आया नहीं है, and we are actually at that particular time we are trying to map the blocks. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि डेटा ही नहीं आया और हम मैप करें उस ब्लॉक्स. तो उसकी वजह से, और हमारा इनिशियल वैल्यू क्या था, नल. सो दैट्स व्हाई इट इज जस्ट वी आर सीइंग दैट एरर कि नल प्रॉपर्टी है. आई होप दैट मेक सेंस. सो अब इसको इस इशू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट the concept of conditional templating means I just show that what does that mean. Okay, so मैं कहता हूँ कि blocks जो हमारे blocks है and it is basically simple JavaScript, ठीक है. मैं क्या कहता हूँ कि for conditional templating we have to use this curly brackets. so, so इसमें actually हो क्या रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि blocks if it is true then you will go to right hand side of this and और ये हमें प्रॉपर वैल्यू देगा. बट इफ इट इज फॉल्स, सो ये आगे एंड के राइट हैंड साइड जाएगा ही नहीं, तो हमें कुछ दिखेगा ही, एक्चुअल ये रिटर्न नहीं करेगा. तो अभी इनिशियली क्या हो रहा है कि अभी हम अपना डेटा को फेच कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग में हमारा डेटा क्या नल है. ओके, अभी हमारा डेटा फेच होने लग गया यूज इफेक्ट में, बट नल है. तो यहाँ पे जब तक ये नल रहेगा, बेसिकली नल है मीन्स फॉल्स है, तो ये हमें लिस्ट दिखेगा ही नहीं. बट वंस वी गेट द डेटा, वी और हमारा ब्लॉग वहां पे दिखेगा. तो लेट्स सी दैट कि होता क्या है. अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको कैंसिल, ठीक है. अभी देखो हमारा एरर चला गया. यस, ना इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे हमने एक और चीज देख ली. कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कंडीशनल रेंडरिंग ऐसे होता है. यू कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर, तो तुमने देखा होगा. तो आई प्रेफर दिस, बट ऐसा नहीं है, तुम्हें दोनों आना चाहिए टर्नरी. दैट्स ऑल, इतना इजी था. Okay, so we have seen that we have fetched our data and we are just showing it onto our browser. But what if our data couldn't fetch? So at that time we have to just show an error. तो वही देखते कि error कैसे show करें. Just make it good. Okay. So let's just catch an error कि अगर हमारा मतलब fetch ही नहीं हुआ डेटा, या means we have not started our server, so it should show some error, na. So for that we will just use catch method. In catch method, okay, I'll just console dot, the time being I'll just consoling it in console. So e dot I think क्या रहता है वो error है, just show the errors, ठीक है. Now let's see that कि अगर मैंने अपना सर्वर ही बंद कर दिया, let's just stop the server. Okay, now let's go to website and just refresh it. Okay, कुछ आया नहीं, एक एरर आया कंसोल. Oh, just a second, I'll just write error, and here I'll use error dot mess. I what message. So when there is no need for curly bracket.
what we can do is okay. Now it should run. Okay, we get an error failed to fetch. Okay, then error आ गया. Now let's again start our server and see one thing. Yes, server has been started. Now what if that हमने कुछ endpoint गलत डाला, ठीक है? मीन्स हमने यहाँ blocks की जगह हमने गलत API हिट करी, ऐसे लिखा मैंने. उस समय क्या होगा? So you guys will be thinking that it should catch an error at that time and वो यहाँ पे होना चाहिए. So let's understand one thing that when we are actually trying to hit an different API which doesn't exist, तो उस समय क्या हो रहा है कि हमारा fetching होगा and after that we will get one response, but वो response हमें एक object होगा तो उसके अंदर we will get one property called uh, response dot okay. Okay, I think okay, हाँ okay property, that it is okay or not, true or false. So if it is response, our response is like that, it is we are getting okay, true as okay as true. So means हमारा proper fetch हुआ है. But अगर हम API गलत hit कर दिया, let's say, तो उसको response क्या आना चाहिए? False. Okay, false होना चाहिए. So उस समय पे this catch will not work. तो ये error हमारा उस समय पे होने लगेगा because हमें कुछ डेटा हमारा रिक्वेस्ट जा रही है और हमें रिस्पॉन्स आ रहा है. तो उसको हमें मैन्युअली हैंडल करना पड़ेगा कि I'll just write that कि I'll use if our for that थोड़ा फील के लिए मैं कहता हूँ कि console dot log I'll just response. अभी रिस्पॉन्स क्या आता है? मैंने बोला कि we will get one property called okay, ठीक है? तो रिफ्रेश इट, रिस्पॉन्स आया okay, so we can see that okay is true, means हमें proper अभी डेटा आ गया. But what if I just hit the wrong API? ठीक है? Now I'll just refresh it. We get a response, and in response there is one property called okay, which is false. False आने पे देखो हमारा डेटा नहीं आ रहा. So means और हमें कुछ एरर भी नहीं दिखा रहा, मतलब जो हमने कंसोल किया था. So that means that we have to manually handle that. So उसको हैंडल करने के लिए what we can do is we will just check if response dot okay, ठीक है? Sorry, if not okay means it should be false. In that particular case we will just throw an error, throw error, and it will be anything. We can could not get the data. I can say that. Okay. Now we have thrown the error, and at that instance the catch will actually execute our message. तो catch में यहाँ पे हमारा error आएगा as an argument और ये console होगा. Again see that, let's see that. Okay, अब हमें दिख रहा है एक्चुअली हमारा हैंडल किया हमने, could not fetch the data. Okay, but अब मुझे ये स्क्रीन पे दिखाना है. I have to just list this error on the screen. ऐसे कभी कभी होता है ना कि अगर सपोज करो किसी वेबसाइट के सर्वर डाउन है एंड यू विल गेट एन एरर कि वेबसाइट सर्वर इज क्रैश्ड, समथिंग लाइक दैट. सो हमें उसको हम प्लेन तो दिखा नहीं सकते, सो वी हैव टू जस्ट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन मेक वन स्टेट फॉर दैट. सो आई विल जस्ट मेक वन स्टेट const error, ठीक है? एंड वन फंक्शन आई विल जस्ट कॉल that error. तुम इस फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी used it, so initially we can make it as empty, ठीक है? mm, we can make it empty or just null.
initially it is null. सॉरी, इनिशियली हम इसको ट्रू रखते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने इसको इनिशियली ट्रू रखा. अब माय क्वेश्चन टू यू इज दैट कि when it should be false. So if someone is thinking that Yash, once we get a data and we are just setting the data, it should be false. So you are right. So हम यहाँ पे डेटा को सेट कर रहे हैं ना. After that what we can do is we can make a set error as false. And why I am doing is that because we will use the concept called concept नहीं है, but conditional rendering में यहाँ पे हम क्या करेंगे, we will use conditional rendering for that. If our error is there, so we'll show that. Okay, मैं लिखूंगा या I'll just use one div. Okay, div, and I'll use error, some error. Now let's just quickly see that what we have done. हमने कहा कि ठीक है एरर आ रहा है, अगर हमने कोई गलत एपीआई हिट करी सो वी शुड गेट एन एरर, बट उस केस में नहीं होता बिकॉज वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू हिट एन एपीआई और वो रिस्पॉन्स भी दे रहा है हमें बैक में, बट उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ओके होगा. ओके में क्या, ओके विल बी वन प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स होगी, ठीक है. सो वी आर मैन्युअली हैंडलिंग दैट explicitly. So if our response is false, अगर okay false है, so we will just throw an error और वो यहाँ पे कैच करेगा, वो एरर डिस्प्ले होगा, ठीक है. बट वो एरर डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, कंसोल में हो रहा है, वो तो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमें दिखे वो, ठीक है. बट इफ व्हाट इफ आई वांट टू जस्ट डिस्प्ले दैट एरर ऑन ब्राउजर, तो उसके लिए मैंने एक स्टेट बना लिया. ओके, तो इनिशियली मैंने ट्रू कर लिया. अब उसके बाद वो फॉल्स कब होगा, उसके बाद फॉल्स जब होगा वो जब हमारा डेटा प्रॉपर फेच हो गया है और हमने सेट कर दिया, ठीक है. तो मैंने बोला कि ठीक है सेट ब्लॉक्स के बाद मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है. अगर अभी यहाँ पे एरर, अभी देखते, लेट्स सी दैट रिफ्रेश पेज, एरर आ रहा है मुझे. तुम इसको अच्छे से कर सकते हो सीएसएस के थ्रू, बट ठीक है समझाने के लिए कि मुझे जूम इट, मुझे एक एरर आया, ठीक है. अभी एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज आई एम जस्ट हिटिंग रॉन्ग एपीआई, ब्लॉक्स कुछ है ही नहीं, इसलिए मुझे एरर आ रहा है. बट अगर मैं यहाँ पे गेस करता हूँ, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यस, आ गया हमारा डेटा. सो हुआ क्या है कि यहाँ पे अगर एरर आ रहा है तो इसके नीचे कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, ठीक है. अगर ये ट्रू है तो नीचे का कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा. सो इफ इट इज फॉल्स, सो ये लाइन हमारी 33 लाइन विल नॉट वर्क. उसके नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अब वो चेक करेगा कि ब्लॉक्स सही में ट्रू है या नहीं. If it is true, so it will show this list. So list is basically another component. That's all. And also that if I am trying to just delete the things from here, so it is just happening in local data, locally हो रहा है हमारा, and we don't want that. We want कि हमारा जो actual DB और JSON है ना, वो चीज यहाँ से भी डिलीट हो जाए, ठीक है. वो कैसा होगा, हमारा मेथड होता है कॉल डिलीट. समझो जब हम फेच कर रहे हैं, वंस वी फेच द डेटा और उसके बाद हम वी विल जस्ट यूज द डिलीट मेथड, तो वो यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए. तो प्रॉपर यू विल गेट अ प्रॉपर फील ऑफ कि एक्चुअल डेटाबेस से काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट. बट ठीक है समझने के लिए उसको हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे.